हेलो, आज हम सीखेंगे कि हम 4x4 रूबिक्स क्यूब की एज पैरिटी को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एज पैरिटी को सॉल्व करने के लिए मैं जो आपको स्टेप्स बताऊंगा आपको उन्हें फॉलो करना होगा। तो सबसे पहले अपने रूबिक्स क्यूब को ऐसे होल्ड कीजिए, उसके बाद मुझे फॉलो कीजिए। तो अब हमारी एज पैरिटी सॉल्व हो गई है। अब मैं आपको इसे एक बार और करके बता देता हूँ। तो अब इस एज पैरिटी को सॉल्व करने के लिए भी आपको वही स्टेप्स यूज़ करने होंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा 4x4 रूबिक्स क्यूब पूरी तरह के सॉल्व हो गया है।